Hi everyone. Hi! So today's vlog is going to be about Anaika and Lucas. not about us. So when we got married, Smriti always wanted to have a puppy, and I said, wait, when we get a baby, then I think we get a dog at the same time because they're good companion. But now Anaika is almost 1 and They still don't get along with each other. yeah. मुझे लगता है मेरे 2 बच्चे हैं और वो दोनों आपस में उनकी पट नहीं रही है and it's very heartbreaking for me at times. Actually Lucas tried but Anaika didn't understand that time कि ये चीज क्या है. She tried to कभी उसको किक्स मार दे, कभी आंख में उंगलियां मार दे, कभी उसको ऐसे, कभी उसकी फर नोच के खाने लग जाए ये वो. So Lucas started feeling now this little thing I can't do anything to her. So he started maintaining and that's when the gap started coming. They are basically, sometimes jealous of each other. I am very shocked that you are admitting to this because every time I tell him that listen Anaika doesn't like Lucas, don't say that. ऐसा नहीं होता है, पर पॉजिटिविटी का मतलब यही है ना कि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा. मुझे क्या देता रहता है पॉजिटिविटी, उसको दे. वाइब्स के बारे में सीखो बेबी, वाइब्स. You see, they will be very good friends. तू वाइब्स के बारे में सीख. मैं वाइब्स. We are trying our best now that they get along with each other because I think now Anaika can walk a little bit, understand a little bit more, and Lucas is also now sure that okay, there's another person. Let's go up and then try this. Okay? Yeah? Chalo. Yeah. Anu! Let's go to Lucas. जाना Lucas के पास आओ. चलो. Anu, you want to give your toys to Lucas? Come on. Give something to Lucas. Give this to Lucas. Give this to Lucas. Lucas. See? Lucas? Anu is giving you her toys. कुत्तों को हमेशा अकेला नहीं छोड़ सकते. हम दोनों अपने काम में बिजी होंगे. If you have a baby तो वो दोनों साथ में बड़े होंगे. Eventually Smriti got pregnant and my best friend Zayed, he gifted us a dog. His son named him Lucas. Lucas को धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरी एक जगह है, उस जगह में से किसी और को मुझे हिस्सा देना पड़ रहा है. वो ज़्यादा खुश नहीं था इस विषय में अनायका को लेकर. Lucas, it's fine. It's fine. It's fine. It's Anaika. Anu, it's fine. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पटेगी ज़रूर, पर शायद हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं. थोड़ा इन्हें समय देना चाहिए. Kissy. See? Kissy. I don't feel comfy doing it. We need some more time. No! No hitting. No hitting. Miss Gundi, listen. Lucas. Look. क्योंकि दोनों को एक साथी की ज़रूरत है. वो मुझे दिखता है कि लूकस भी अकेला काफ़ी रहता है, और तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया. मैंने कहा कि ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे शायद दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा खेल सके. It was Gautam's idea and Gautam ने कहा बॉल फेंकते हैं and हो सकता है कि they become playful. Lucas, see, Anu wants to play with you. Come on, give her the ball. Yes. Give him the ball. Anu, give him the ball. Yes, throw. Give him the ball. Luca, take it. मुझे ऐसा लगा उस मोमेंट में कि Lucas was in his own world. He didn't want to play with Anaika. वो अपनी बॉल लेके हर बार कोने पे बैठ जाता था. Go to him. Yes, go to him. He's not even coming near Anaika. Then we had to call him again and again. Lucas, come. हाँ, take it. Take it from him. Oi. ओए, no झगड़ा, no fighting. कि लूकस बॉल लेकर बैठ जाता था, तो मुझे लगा एक बॉल से काम नहीं होगा, 2 बॉल लेते. मैं एक और बॉल लेकर आया. Anu, throw. Come on, Lucas. Lucas is getting it. Come on. Good boy. अच्छा, आप लोग. ओए, नहीं. ओए, लड़ाई हो गई. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. दोनों एक दूसरे के प्रति वैसे ही थे. वो अपना चल रही थी और ये अपना एक बॉल लेकर बैठ गया. चल. Anaika,
It's not happening with me. What he? तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ करते हैं कि जो भी लूकस को कुछ खिलाता है तो वो हमेशा उससे काफी प्यार करता है. To Lucas and become his friend? Yes. Okay. Good. So proud of Lucas being a foodie like any other dog, of course. तो हमें लगा कि of course it's going to work. He'll wait कि कब अनायका आएगी और मुझे कुछ खाने के लिए देगी या मुझे मेरी treats देगी. Lucas, he's very gentle with her. Like every time Anayaka tries to feed anything or even if she's close by, he's very gentle. I don't think that जो हम सोच रहे थे that didn't work. उसने अपना treat खाया उसके हाथ से and he just left. And I was thinking at least एक बार उसको लिख तो करेगा, but no. Anayaka doesn't like Lucas. I have this feeling, you know. No. Come on. Arey. Anu. Every time Lucas has even tried, Anayaka will just push him. Not that it's her fault or anything. She doesn't like maybe being licked. So maybe, she has her reasons. See, Lucas is feeling very bad now. Go. Arey? Lucas! Anayaka did put in some effort for the first time. Go. Go to Lucas. So even when Lucas was eating his food, Anayaka went there and she was trying. But now I think because Lucas has realized कि अनायका को वो पसंद नहीं है, तो लूकस भी अब उससे दूर रहता है और वो नहीं डालता कुछ भी एफर्ट. और अगर अनायका पास आती भी है तो या तो वो अपना फेस टर्न कर लेता है या तो फिर वो उठ के चला जाता है. लॉट ऑफ टाइम्स वी नोटिस्ड एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग बट दैट्स व्हाट इट इज. So what did you think about today? Like all the efforts that we tried. I've always been thinking बहुत अच्छा है, सही है. सब beginning यार, ऐसे ही होता है. सही क्या हुआ आज? दो जन एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते नहीं है, अपने आप को भी नहीं समझते, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पहली बार मिलने की कोशिश की, उसमें सिर्फ एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं. Anyway, it was a big fail. Which I he think doesn't it wasn't agree. a fail. I think it is a good He attempt. just wants to be positive all the time and I don't get it. Like, be realistic also. Well, let them decide that. Alright. Guys, we'd like to hear whether you think it was a good first attempt or it was a failed attempt. So guys, if you do like what we're doing, please If you do like what like, you're share doing. and subscribe. So what we are doing. You said if you like what you're doing. भी आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. Please do watch our तू channel. यार हिंदी में like, बात करने subscribe वाला था ना? और देखो. तो हिंदी में बात नहीं कर रहा हूँ. कर ढंग से हिंदी में बोल के दिखा. सबने कंप्लेन करी है तू हिंदी नहीं बोलता और मैं भी तेरे साथ इंग्लिश बोलती रहती. कम ऑन टॉक इन हिंदी. वाह, मेरे पे डाल दिया. सुन देख ले कमेंट्स मेरी पढ़ता है हिंदी अक्सर. बहुत ही शुद्ध है. कमेंट्स. इसकी इतनी शुद्ध है अगले में सुनाऊंगी. चलो बाय. बाय.